Hello and welcome. You are watching the prime time show on IBAN News Network. We always try our best to promote art, culture, music, achievements, success, literature of our valley. Today we are pleased to have with us a very young personality from literature, only a 15 years old female, Irtika Fayaz Khan from South Kashmir. Though her age is too small, but her contributions are much bigger. Welcome, Irtika. Thank you. Thank you for inviting me. Uh, Dear viewers, Irtika is the youngest author of Kashmir. Irtika, though you are very much popular, very much familiar, but I wish you to introduce briefly about yourself and also about your Sure, basic sure, schooling. sure. It's me, Ittika Fayaz Khan, and I am from Gopalpura area of Anantnag. So I'm presently studying in class ninth in Anantnag. My school name is Siddra Institute of Education. So that's it. And I have co-authored two books. First one is Alfaz, the Power of Words, and that was compiled by Umaisa Ejaz. Second one is Shimmering Shines, that was published by Forever Shining Sahil Chopra and one another. And then I came up with my own anthology book, The Merged Miracles of Pen. I will later on come to your books. First of all, you have to face some questions. Irtika, when did you first realize that you should start to write down something, even in this age? And was it accidental? Yeah, very much accidental. Actually, I was in class 6th. इन सिक्स स्टैंडर्ड व्हाट आई डिड कि मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली पोएम लिखी आई वाज नॉट मतलब इन दिस थॉट कि आई हैव टू बिकम अ राइटर और आई विल ऑथर मतलब एंथोलॉजी या लाइक दिस सो आई रैंडमली रोट अ पोएम सो फिर क्या हो गया लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन क्लास 8 सो लॉकडाउन एज यू नो सो पैंडेमिक चल रहा था सो व्हाट आई डिड कि आई जस्ट शेयर्ड दैट पोएम थ्रू कश्मीर पल्स तो ऐसी फेसबुक इंस्टा वगैरह उसी पे था वो तो आई गॉट मच मोर रेस्पॉन्स पीपल लाइक उन्होंने अप्रिशिएट किया यू शुड राइट मोर यू शुड राइट मोर तो फिर मैंने खुद सोचा कि अगर मेरी 6 क्लास की लिखी हुई पोइम को इतना प्यार मिला इतनी अच्छी है वो तो आई शुड गो इन दिस फील्ड सो आई जस्ट को ऑथर्ड देन दीज टू बुक्स देन आई केम अप विद माय ओन एंथोलॉजी बुक एंड हियर आई एम Okay. Now in Kashmir, it has become a trend that everybody wants to be a writer, everybody wants to be a yeah. novelist, everybody wants to pen down something. What it was? What is it? Is it accidental now? What forced, especially the males and females, youngsters, to this literature? What happens? What is the reason? Actually, in my view, there are two situations. One is one of those writers मतलब who write through their heart मतलब उनमें writing जो होती है मतलब that soul that's everything. I can't judge whether मतलब this writer is that one or this writer isn't that one. And second one क्या होता है कि some writers are doing like only for fame, not for the name. So मैंने मतलब I can't point out those but still I have seen some मतलब जो लिखते हैं हाँ they try their best to मतलब bring up something new to society and do something for them by writings too मतलब they can do much more through writings but some writers ऐसे भी होते हैं who do just do for fame they come up with big books and huge books but they just do for their fame but difference सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि we should go for the fame or media attention or something else we should do our writing we should write whatever comes in our mind and writing comes to you own selves it's not like कोई भी writer in my view planned नहीं लिखता है कि हाँ मैं plan नहीं करती कि हाँ मुझे आज लिखना है it jumps just comes accidentally in your mind and then you pen down so ये चीज view में होनी चाहिए कि we should do this for fame ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि हाँ we have to do this ताकि हमारा नाम रहे we should do this for name and we should do this for society not for fame so how these are one the will two how situations. how one will judge an effective writer? अगर एक लेमैन है उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको कैसे लगेगा? अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन आपने अच्छी बात छेड़ी. Now everybody wants to get his name, wants to be popular. So Hmm. he copied some books, then authored Hmm. his own book, give us some title, different title.
then he want only fans. But how one can judge an effective writer? आपकी नजरों में कैसे जज किया जा सकता है? मेरी नजरों में एक इफेक्टिव राइटर को ऐसे जज किया जाता है, मतलब जब एक राइटर की हम मतलब राइटिंग्स पढ़ते हैं, जब वो कनेक्ट होती है ना अपने हार्ट के साथ। लाइक जब हम किसी की राइटिंग पढ़ते हैं ना, मैंने कुछ दिन पहले आईन अल्ताफ की एक राइटिंग पढ़ी। लाइक मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये उसने लिखी है। फॉर सम टाइम आई वाज लाइक ये मत मैंने लिखी है। मतलब जब एक रीडर एक मतलब ऑथर या किसी राइटर या पोइट के साथ मतलब पोइट का कुछ पढ़ता है, कुछ भी राइटिंग, चाहे वो छोटा सा कोट भी हो, और वो आपकी लाइफ के साथ रिलेट करता है या आप उसको रिलेट कर पाते हो, या आपके मतलब लाइफ के साथ वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, तो आपको लगता है कि हाँ ये राइटर इफेक्टेड है। समटाइम्स कोई बड़ा राइटर भी होता है जो वैली का मतलब बहुत फेमस होता है, आप पढ़ते बट आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो अपने साथ, या आपको उसके इमोशन समझ में नहीं आते हैं, तो आप उस टाइम पे उसको जज नहीं कर सकते हो कि हाँ वो भी अपने लेवल का होता है, वो भी इफेक्टिव होता है, बट हमें नहीं लगता। तो मैं कैसे मतलब जज कर सकती हूँ, आप कैसे कर सकते हो? आप अगर मेरी राइटिंग पढ़ोगे, आप अगर उसको रिलेट करोगे ना अपने साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं हूँ इफेक्टिव राइटर। अगर आप नहीं कर पाओगे रिलेट, आपको समझ में ही नहीं आएगी, तो हाउ यू शुड मतलब हाउ यू कैन जज कि आई एम इफेक्टिव? So during writing, one needs to be practical. You mean to say? या Okay. Okay. What दैट्स व्हाई qualities one राइटर को should? इमेजिनरी दुनिया में होना चाहिए, so Yeah, that okay. he can look for. What qualities one should possess to become a good writer? I think a writer should be highly imaginative, मतलब बहुत ज्यादा। और उसको मतलब एज आई सेड अर्लियर कि राइटिंग मतलब जो राइटर होता है उसको प्लान नहीं होता कि हाँ मुझे आज ये लिखना है। जब वो अपनी सोसाइटी में कुछ देखता है या उसके साथ पर्सनली लाइफ में कुछ होता है, तब उसको हाँ उस टाइम उसको आइडिया आता है कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे लिखना है। वैसे उसको प्लान कुछ नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो एक राइटर को इमेजिनरी दुनिया में होना बहुत जरूरी है, हाईली इमेजिनेटिव, ताकि वो मतलब देख सके, मतलब बाकी का माइंड भी थोड़ा माइंड सेट ब्रॉड होना चाहिए। Okay. Who is your teacher or who is your mentor, and how much a teacher plays role there? आई गेस अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम स्टिल इन 9th स्टैंडर्ड, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट लिटरेचर एंड ऑल दैट, सो आई नीड देयर समवन हु विल चेक माय राइटिंग्स बिफोर पब्लिशिंग और बिफोर promoting them on social media. So there always remain my school teacher. I should take her name proudly. Her name is Masrat, and she's always mentoring me all around. चाहे मैं स्कूल में हूँ या घर में हूँ, if one मतलब one call she checks my all writings and all, whether there is any correction or anything else, she just tell me there. So वो मेरी हमेशा एक गाइड रहती है। और एक मतलब राइट अभी मैं मतलब अभी वैसी मेरी एज नहीं है कि हाँ मुझे सारा लिटरेचर का पता है। आई जस्ट हैव कन्फाइंड सिलेबस अप टू 9th क्लास, तो वहां तक का जो है, तो इसलिए टीचर एक बहुत ज्यादा रोल अदा करता है, ताकि जो एक कोई भी आर्टिस्ट हो उसके लिए दो लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, एक पेरेंट्स और टीचर, क्योंकि इन दो इंसानों के सपोर्ट के बगैर एक आर्टिस्ट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो राइटर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी वॉट एवर। Okay. Where from you get ideas? Ideas आपको कहाँ से मिलते हैं? No doubt you live in the world of imagination. आइडियाज मिलते हैं कि जब ऐसी सोसाइटी में कुछ देखने को मिलता है, लाइक कश्मीर का कोई मसला है तो उस पे मैंने पोएम लिख दिया। कुछ ऐसा होता है जो हमारी लाइफ में पर्सनली कुछ होता है तो उस पे poem लिख दिया। आइडियाज ऐसे ही मिलते हैं, या कुछ होता भी नहीं है, माइंड में ही कुछ कभी ख्याल आता है कि हाँ, इस मसले पे लिखना चाहिए, ऐसी आइडियाज मिलते हैं। Okay. Now let's come up with your first book. You have penned down your first book, The Merged Miracles of perhaps what is that? Pen, yes. So how did you pen down this book? What was the main imagination there? Is it imaginative or something happened in your practical life? Because of which any accident with your practical life, in your vicinity, in your environment, in your society, because of which you have penned down this book, and what message you have conveyed to the viewers, to the authors, to the writers in this book.
Actually, this isn't only the book of mine. It is the book of 20 co-authors and me. I want to, like put all the credits on me. There are 20. There is my team. There is a whole team of the Merged Miracles of Pen who made me successful although. So what happened ke I just co-authored the anthology of Umaisa. So then I got idea that I should also bring up my own anthology book. So I collected 20 poets, 20 writers from all over the Kashmir, and I compiled that anthology book. The Merged Miracles of Pen just brings together 20 poets. They have different point of view about life because of variations in culture, society, and it's common. Everybody has different point of view. So the Merged Miracles of Pen is not only about novels. It's about novels, it's about prose, it's about poems and all that. So वहाँ पे different writings है. तो उस बुक से क्या होता है कि like it is you just told कि give a message what मतलब Merged Miracles of Pen gave. Merged Miracles of Pen gave Kashmir can be united and हम एक दूसरे को सक्सेसफुल बना सकते हैं. मेरे वजह से वो 20 पॉइंट सक्सेसफुल बन गए और उनकी वजह से मैं सक्सेसफुल बन गई. सो वी कैन मेक ईच अदर सक्सेसफुल. अच्छा, यही मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं इस बुक में कि वी कैन या आवर इफ वी विल वर्क यूनाइटली, वी विल टुगेदर वी वर्क कैन मेक जॉइंटली. ईच अदर या सक्सेसफुल. ओके. इससे पहले कि आपने ये बुक पब्लिश की, लेकिन उस आपने कुछ बुक्स ऑथर को ऑथर्ड भी की है. मुझे बताइए, वो को ऑथर, यू आर आल्सो ए को ऑथर ऑफ अदर टू बुक्स, उसने कितना रोल अदा किया कि आपने इस मिशन में, अपनी फर्स्ट बुक में जो फतह हासिल की, कितना रोल रहा उन बुक्स का? उन यू ऑलरेडी यू टोल्ड मी दैट देयर वर 20 ऑथर्स, सो कितना रोल रहा इससे पहले? एक्चुअली फर्स्ट बुक जो मैंने को ऑथर की वो थी अल्फाज. तो उससे उसके बाद शिमरिंग शाइन्स, वो दोनों पब्लिश्ड बाय नेशन प्रेस. फॉरएवर शाइनिंग है. तो उससे मेरे को एक मतलब ब्रॉड विजन मिला कि हाँ मतलब बुक पब्लिशिंग वगैरह ये कैसे होती है, एंथोलॉजी बुक कैसे पब्लिश करते हैं, सोलो बुक कैसे होती है, तो पब्लिशिंग हाउस के साथ डील कैसे करना होता है. तो मुझे उस उन दो बुक से ये सीख मिली. वरना अगर मैं डायरेक्टली अपनी एंथोलॉजी बुक पब्लिश करती तो आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसी सक्सेस मिलती. तो उन दो बुक्स का मतलब मेरी जो लिटरेचर फील्ड है, मेरी जो राइटिंग का फील्ड है, उसमें मतलब कि बहुत ज्यादा रोल अदा किया है उन दो बुक्स ने. क्योंकि अगर मैंने वो दो बुक्स को ऑथर नहीं की होती, मुझे पब्लिशिंग का कोई आइडिया नहीं होता, मुझे एंथोलॉजी का कोई आइडिया नहीं होता. सो एवरी चाहे वो कोई भी सक्सेसफुल इंसान हो, चाहे वो राइटिंग फील्ड का हो या किसी भी फील्ड का हो, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं. और वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ऑल्दो छोटा ही होता है, बट वो उस बड़ी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. तो सेम इज द केस विद दीज टू बुक्स. ओके. हाउ वाज द पेरेंटल कोऑपरेशन? Firstly, when I published my first poem through na Kashmir Pulse, तो उस टाइम पे parents were like, हाँ she is doing something, मतलब उतना नहीं करेगी. But when I co-authored Alpha, Shimmering Shines, then came up with my own anthology, then parents were, I got my full support of parents. They were like, हाँ you are doing, so you should do this because you are doing your best. So parents का तो full support रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी parents support कर रहे, full support दे रहे. बिसाइड्स राइटिंग मैं और भी मतलब करती हूँ लाइक कैलीग्राफी एटसेट्रा, तो उसमें भी पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह. बट वी नीड टू डू वन थिंग, वी नीड टू बैलेंस आवर स्टडीज एज वेल एज आवर फील्ड. You said you need to balance your studies. Though you are an author, you are a student, ninth standard student. You know what is the standard nowadays. One more important thing, you are also a calligrapher. You are also an artist. But how did you manage the time? Actually, what I do is कि before starting a new project of book, whether it's of calligraphy, whether it's of art, etc., I just manage a timetable in advance for my new project. So I keep a fixed time of my studies. Then, firstly, I just take time of my studies. Then after my writing and then after my art, I just keep a fixed timetable ताकि जो मतलब studies है वो सफर ना हो मेरी. So that's what I do.
इज राइटिंग योर पैशन, और आप इसको अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स कहते हैं यू हैव टू बी डॉक्टर और यू हैव टू बी एन इंजीनियर? Actually, my parents are like not तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है. They are like कि जिसमें भी तुम बेस्ट हो तुम वही करो. एंड जब जहाँ तक कि मेरी मतलब राइटिंग का सवाल है, दे आर फुली सपोर्टिंग मी. एंड मतलब जहाँ तक मेरा इंटरेस्ट है वो भी अब राइटिंग में ही है. देयर इंटरेस्ट इज माई इंटरेस्ट, so they support in writing. But they don't force like others, yeah, like there is a fixed doctor, engineer, and other. But what's your personal choice? What's your aim in your life to be? Actually, besides writing, I want to be professor. So that's it. You want to be assistant professor. For that, you Yeah, have to pursue higher education. You have to go for yeah. PhD. You have to go for NET. You have to go for JRF. Inshallah. Now, with the increase in your standard, now you are in ninth standard. So somehow you can manage the time. You don't have much more burden. You don't have much more workload. But in future, you might face these things. So at that time, will you continue to write down something? Will you continue to be a calligrapher? What you will do in future? Actually, I don't think I will leave. मतलब, not it's not about the thoughts. It's like हाँ पक्का I will not leave writing and my calligraphy because they are not load on my shoulders. That's like a normal timetable, and I will manage inshallah. Because when I will So be you mean no also to say that there is no effect on your studies. no not at all, So you will manage the time. inshallah. Okay. So far as your first book is concerned, how much time it takes you to publish that particular book? Firstly, I was thinking for 1 month about करूँ publish या नहीं. So it took 1 month Okay, to think before about before that. let's later on we will talk about publishing. How much time it takes you to complete that particular book? Almost 1 year. 1 year. Yeah. Any credit you want to give to lockdown, because everybody they were at their homes. Yeah. I guess 90-80% of credit goes to lockdown because अगर lockdown ना होता, so I would be busy with my own schedule like tuition, school, homework, and again that. But I guess lockdown gave me the opportunity to be an author. Yeah, I'll give credit to lockdown. But you have done a tremendous job during lockdown, because there were so many our young not authors but our youngsters who were busy in other works. Drug addiction is there. Similarly, other social evils are there. But you have done a tremendous job. Okay, now tell us how to publish a book. There are so many females, there are so many males, so many youngsters who want to pen down something, but they are then confused how to publish the book and what is the amount to be spent on publishing these books, in on publishing a book. So you tell us something about this. We can publish book in Kashmir. I guess it's better self-publishing. What is the way कि we have to contact with any publishing house? Like I am publishing through Forever Shining, so you can contact them or any other publishing house. Then what you have to do is you have to make the manuscript of whatever you have written. Either you can make it on phone or either you can make it through laptop, extra. It's your choice. Then after you have to send that manuscript to the publisher and फिर बाकी जो process है publishing तक वो वही करेगा. Then the price is maybe it can go to 3,000 also, but it's not that much. It depends on the pages, it depends on the maybe sometimes content also, but today it's not dependent on content. Today they take for pages, like how many pages, how much cost. So we can do it through Okay. self-publishing. But there are so many our youngsters, our authors who want to publish a book, but unfortunately, they don't have much more financial support.
Perhaps 1 month before, I used to have a live interaction with an author. She was also a female. I don't want to point out her name here. She said that I don't have much more family support, so I need financial assistance. So, how was your financial assistance? And how much is the cost to publish a book? Is it vary? Is it varying from place to place? Or you tell us minimum? What's the minimum amount one should have to publish the book? You also said it depends upon the number of pages, but approximately how much amount you spent on your book to be published? If it's your solo book, then like you're writing it alone. So minimum you have to pay around 3,000. And it varies. Maybe one publishing house I know about, Forever Shinings, they take about around 3,000 for one book. But another publishing house can take more or less. I don't know about those, but Forever Shining take 3,000 for solo. So it varies from publishing house to publishing house. And another, what you said, is financial problem. I don't think so. मतलब अगर एक writer को financial problem होगी तो उसकी writing पे effect पड़ेगा, because there is social media today. He or she can share his or her writings through social media. मैंने भी जब पहले start किया, मैंने कौन सी पहली book publish करी, तो we have to start from small steps. या अगर ये हमारे government का भी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उनका भी क्या होता है कि अगर किसी का कंटेंट इतना अच्छा रहता है, हाँ, जो सोसाइटी के साथ रिलेट करता है, उसको वो मतलब हाफ रेट पे पब्लिश करते हैं. सो यू कैन गो फॉर दैट. तो अगर आप ऐसी बुक लिख रहे हो जो सच में वर्थ इट है, तो दे कैन पब्लिश इट ऑन हाफ रेट. सो देयर इज नथिंग. पॉवर्टी डजंट इफेक्ट राइटर्स और राइटिंग. आई थिंक सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म आज कोई भी नहीं है. सो यू कैन शेयर देयर. तो अगर वहां पे रीडर्स के साथ आपकी राइटिंग कनेक्ट हो रही है, आपकी इमोशंस उतने वैसे है राइटिंग में, तो आप रीडर्स का दिल वैसे भी छूओगे. इट्स नॉट लाइक हाँ बुक पब्लिश करनी है जरूरी ऑथर टैग होना चाहिए. देयर इज, आई जस्ट सेड कि वी शुड नॉट वर्क फॉर फेम. दैट्स इट. Uh, According to your perception, how much role social media has played from last couple of years? Hidden talent is coming now. We are in a position to explore the hidden talent. So, how much credit you want to give to social media? Yeah, social media As has earlier you played, said. yeah, social media is a huge platform where whether there is a person who is financially good or not, both can share their writings and both can share their art. Whatever he is pursuing in his life, he can share his or his that. तो सोशल मीडिया पे ये नहीं है कि हाँ ये फाइनेंशियली पुअर है या मतलब ये फाइनेंशियली रिच है. एवरीवन कैन शेयर. तो वहां पे क्या होता है सोशल मीडिया पे, यू गेट अ प्लेटफॉर्म टू शेयर योर इमोशंस, आइडियाज, राइटिंग्स, फीलिंग्स, व्हाटएवर. तो सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा रहता है एक आर्टिस्ट के लिए. तो सोशल मीडिया को तो बहुत क्रेडिट्स जाते हैं, लेकिन बिसाइड्स दैट उसके डिसएडवांटेजेस भी, हर किसी के डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन एक इंसान तक है कि वो कैसे उसको यूज करे. कोई इंसान अच्छे के लिए भी यूज कर सकता है, जैसे कि आज बडिंग आर्टिस्ट है, वो उसको मतलब लाइक दे टेक इट फॉर मतलब नाइस यूज. लेकिन बाकी जो होते हैं या कोई ऐसा उसको गलत वे में भी ले सकते हैं. फिर ये एक इंसान तक है वो कैसे उसको यूज करेगा. ओके, यू आर द यंगेस्ट टू कंपाइल एन एंथोलॉजी. इसके साथ साथ जो आपकी बुक है, इट में रिकॉर्ड इन इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. सो हाउ इट वाज पॉसिबल? Firstly, it was possible by the grace of Allah, and then I think it was possible by my hard work and other my team 20 points. And credit also goes to your content. Yeah, because there Any isn't award you have? only confined poems, yeah, novels. There is everything in my book. There is everything, whether they are prose, poems, poetry. There is everything. मुझे बताइए, you have got any award from any government organization once you published this Not book? yet, not yet, because I have just started just 1 year ago. So not yet. I just made a record in India Book of Records, and still I'm working on another book, inshallah. So still it's confined to this. So inshallah, maybe in future. Okay. Uh,
we have perhaps if I will concern about myself, I have interacted with more than 500 writers, novelists, poets, but everybody told me that there is not much more exposure so far as literature is concerned in Kashmir. So how you are looking towards this? Government Yeah, is it's not right. keen interest. Government is not keen interest towards this. So what do you think? What's your personal Yeah, feeling? it's right. There isn't much more attention towards writing. Like we don't take writing as our subject or मतलब we don't focus on writing. It's like part time. जिसको भी करना है, he can do it part time. But government should do one thing कि मतलब government should focus on this writing because हमारा कश्मीर भी इसी से represent होता है. Like we have much more writers from past, Lal Ded, Habba Khatun, like much more. So we Kashmir is represented by writing, so they should work on this. मतलब scholarship should be there for writing. There should be workshops, coaching centers, academies जहाँ पे writing का course हो. तो वहाँ क्योंकि जो भी writers है they are doing on own. मतलब वो खुद कर रहे हैं. चाहे वो online study हो या घर में कोई teacher हो, they are doing on own. There isn't any governmental support. There isn't any academy who is supporting them. Okay. So what your message is clear to the government that government should provide a platform to our Yeah. youngsters. Yes. Okay. Do you think there can be a career opportunity in literature too, so far as Valley is concerned? Let's talk Yeah, why about not? yourself. If Why not? Because I today we can pursue our career from home because there are much more jobs in मतलब writing field. Like we can do content writing, we can do blogging, much more we can do with writing. So we can pursue it from home. And many girls are doing it from home. And I know few of them. They are content writers, they are bloggers, they are doing from home. So yes, there is opportunity in writing field. That's why it should be paid much attention. okay. Your parents are cooperative, but there are certain our writers whose parents are not cooperative. Their parents only want them to be a doctor, to be an engineer, to be a philosopher. But their passion and their profession is writing. What will be your special message to those parents whose words want to pen down something? My message for all parents overall would be that please support them because their interest is in that field. Maybe there might be any interest in doctor, engineer, something else, but their heart is connected with writing. So they should support them because वो अपना बेस्ट उसी फील्ड में दे सकते हैं क्योंकि वो पूरा अटेंशन उसी पे कर रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट जो है वो राइटिंग की तरफ है, तो वो बेस्ट भी उसी में देंगे. हाँ, आधे पेरेंट्स देखे मैंने ऐसे जो जिनका कन्फाइंड होता है कि डॉक्टर इज इंजीनियर मे बी प्रोफेसर या समथिंग एल्स मोर, बट वो आर्ट या राइटिंग या ऐसे फील्ड्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. तो मेरा जो मतलब पूरा पूरा ओवरऑल ऑल मैसेज है वो यही है कि उनको सपोर्ट करो ताकि वो उस फील्ड में बेस्ट दे. हाँ, वो जाएंगे, वो डॉक्टर भी बनेंगे, वो इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन वो उसमें बेस्ट नहीं दे सकते. वो बेस्ट उसी चीज में देंगे जिस चीज में उनका पूरा इंटरेस्ट है. तो अगर वो राइटिंग में है तो वो उसी में 100% देंगे. तो लेकिन वो तब ही देंगे जब उनको पेरेंट्स का सपोर्ट होगा बिकॉज जो बडिंग आर्टिस्ट होते हैं या जो यंग होते हैं, जो जो अभी भी पेरेंटल केयर में होते हैं, वो पेरेंट्स की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते. तो जब तक उनका पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा, दे कांट डू देयर बेस्ट इन एनी फील्ड. You are the youngest author of Kashmir, I think so, who has published a book. तो और आपकी जो बुक है उसको that has also made a record in Indian Book of Records. तो किस तरह से आप इस वक्त how much pride you feel, कितना फख्र आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा बिकॉज़ जब मैंने स्टार्ट किया था, आई जस्ट स्टार्टेड विद अ पोएम, आई गेस 6 और 7 लाइन्स पोएम. तो उस टाइम पे मेरा विजन इतना ब्रॉड नहीं था कि हाँ, रिकॉर्ड बनेगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में या ऐसा होगा, मैं यंगेस्ट होंगी. उतना इतना मैंने नहीं सोचा था, बट जब हो गया तो उस टाइम पे आई थॉट कि हाँ, रियली हार्ड वर्क पेज़ ऑफ. एंड
It's the hard work of me and other my team, my 25. आपकी लाइफ में ज्यादा आपको इंस्पायर किसने किया? कोई ऐसा ऑथर जिसने आपको इंस्पायर किया? और दूसरा क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपके टीचर्स है स्कूल में, वो किस कदर आपको मोटिवेट करते रहे? इंस्पिरेशन तो ऐसे कोई पर्टिकुलर राइटर या पर्टिकुलर ऑथर नहीं है, बिकॉज ऐसे मैं पर्टिकुलरली किसी एक की राइटिंग नहीं पढ़ती, लेकिन एक ही है कश्मीर की जिसकी राइटिंग मुझे बहुत पसंद है। उसने ये मर्जेड मिरेकल्स ऑफ पेन को ऑथर भी किया, अजरा मुफ्ती, डॉक्टर अजरा मुफ्ती। तो हाँ, उसकी राइटिंग से मुझे मतलब थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो हाँ, वो उसका नाम मैं लूंगी, बट ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई राइटर नहीं है जिससे मैं इंस्पायर हुई। तो दूसरी बात जो टीचर्स की है, हाँ टीचर्स अभी भी मोटिवेट करते हैं, बट दे जस्ट सजेस्ट कि बैलेंस बोथ स्टडीज एज वेल एज योर फील्ड। Okay. Now you have published your first book. You have got the achievement in that particular field, and that book was also that made a record in India. Now your future. प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Yeah, I will repeat. You achieved the success in publishing your first book, and that book also made the records in India. So, what's your future strategy now? What's your future mission? What's your future plan? In future, inshallah, I'm coming with my solo book, and what's the idea? I'm researching that whatever is extincting in Kashmir, whether it's a flower, whether it's a place, whether it's culture, whether it's tradition, whatever isn't here presently in Kashmir. सो आई एम राइटिंग दोज जो भी एक्सटिंक्ट हुए हैं कश्मीर से। तो लेकिन आई एम ट्राइंग टू राइट दैट इन कश्मीरी लैंग्वेज। फर्स्ट आई विल राइट इन इंग्लिश, देन आफ्टर आई विल ट्रांसलेट इन कश्मीरी। तो उसके बाद इंशाल्लाह जब पब्लिश हो जाएगी तो जो यंग बच्चे हैं या यूथ है कश्मीर की, दे विल गेट टू नो कि व्हाट वाज कश्मीर एंड व्हाट इज इट, मतलब इन प्रेजेंट। सो उससे लोगों को ये पता चलेगा कि कश्मीर में क्या था और अभी क्या नहीं है, मतलब कितना हमने खोया है, तो वो उससे पता चलेगा। लेकिन आई विल ट्राई इंशाल्लाह टू राइट दैट इन कश्मीरी, क्योंकि अभी हमें वैसे राइटर्स नहीं मिल रहे जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखे। वी आर गोइंग फॉर इंग्लिश, वी आर गोइंग फॉर उर्दू, बट नॉट फॉर कश्मीरी। इसके पीछे रीजन क्या है? मुझे बताइए। उभरते हुए जो नए राइटर्स है, ये दे ओनली चूज इंग्लिश मीडियम, एंड जो उर्दू है या लिटरेचर, जो कश्मीरी लैंग्वेज है या बाकी जो भी कोई लैंग्वेज है, उसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? आपको क्या लग रहा है, हमने अपने कल्चर को क्या खोया है? आई गेस ये स्कूलिंग को भी दो जाता है, क्योंकि जो हमारे पॉलिसीज स्कूलिंग की है उसमें कश्मीरी को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने खुद 8th तक कश्मीरी पढ़ा है, एंड नाउ वी आर स्टडीइंग कश्मीरी। बट तो इसलिए कि जो बाग मेन फोकस होता है वो हमारी अपनी लैंग्वेज पे नहीं रहता है। स्कूल में भी अगर कश्मीरी में थोड़ा बहुत हो जाए तो चलता है, बट इंग्लिश में परफेक्ट रिजल्ट आना चाहिए, उर्दू लैंग्वेज में परफेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। कश्मीरी पे उतना जोर नहीं होता, ये स्कूलिंग पे भी दोष चढ़ता है। तो इसलिए अगर स्कूलिंग से ही, बेसिक स्कूलिंग से ही फिर फर्दर भी हम कश्मीरी पे ध्यान दे, तो मुझे लगता है जो राइटर्स है वो भी कश्मीरी में लिखेंगे। अब जो वो स्टूडेंट्स है जिनकी स्कूलिंग सिर्फ इंग्लिश में हुई है या उर्दू में हुई है, तो वो वही परस्यू करेंगे। अब वो राइटर या सिर्फ वो ऑथर अपनी बुक या अपनी राइटिंग कश्मीरी में लिख सकती है जिसकी स्कूलिंग में कश्मीरी सब्जेक्ट था। तो स्कूलिंग पे असर, मतलब ये ना दोष है इस चीज का कि वो कश्मीरी परस्यू नहीं करवाते स्टूडेंट्स को। क्या आपको लग रहा है इसमें दोष है पेरेंट्स का भी? क्योंकि अक्सर अभी बच्चा सिर्फ 1 साल का होता है, हम उसको वेस्टर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि उसको यही कहते हैं कि सिर्फ आप इंग्लिश में बात कीजिएगा, सिर्फ उर्दू में ही बात कीजिएगा, आप कश्मीरी में हाँ, बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो आपको लग रहा है इसमें पेरेंट्स का भी बहुत, पेरेंट्स को भी हम दोष दे सकते हैं? पेरेंट्स का दोष दे सकते नहीं, पेरेंट्स का दोष है इसमें, क्योंकि जब एक बच्चा मतलब बात करना स्टार्ट करता है, हम डायरेक्टली जस्ट वी से कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो ये वही है, जब जैसे ही बच्चा मतलब बड़ा होता है तो हम उसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि मतलब उर्दू में बात करो या इंग्लिश में बात करो। इंग्लिश में मतलब ऐसे एक दूसरे को बुला, उन नामों से पुकारो जो कश्मीर में मतलब एग्जिस्ट ही नहीं होते। तो पेरेंट्स का भी दोष चढ़ता है, बिकॉज अगर पेरेंट्स हम पहले से ही ऐसी मतलब लैंग्वेज सिखाए जो हमारी खुद की लैंग्वेज है,
तो आगे जाके हम उसमें कर सकते हैं कुछ। लेकिन जब पहले से हुआ ही नहीं, स्कूलिंग में भी कुछ नहीं हुआ, पेरेंटल केयर ने भी कुछ हमें दिया नहीं कश्मीरी लैंग्वेज को, तो राइटर फिर कहाँ से लाएगा? वो थोड़ी ना उसी टाइम सीख सकता है, उसी टाइम लिख सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें, यू ऑल्सो टोल्ड मी दैट राइटिंग वॉज जस्ट एक्सीडेंटल। राइटिंग एक्सीडेंटल होती है, कभी कभार कुछ भी हम्म। इंसिडेंट होता है, कभी कभार यू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड इट्स मैंडेटरी फॉर अ राइटर टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो मुझे बताइए, आपके साथ ऐसा क्या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ कि जिसने आपको डाइवर्ट किया और उसके बाद आप यू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन? हालांकि इमेजिनेशन जो है वो एक्सीडेंट्स के बगैर भी आ सकती है, लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि आपने यू हैव पेन डाउन योर फर्स्ट बुक? हुआ ये कि जब मैंने पहली पोइम शेयर की, तो उस पोइम के बाद मैं मुझे बहुत सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का भी, रिलेटिव्स का भी, टीचर्स का भी, बिकॉज वो लोगों को बहुत पसंद है। ऑल्दो इट वाज शॉर्ट, वो आई गेस 6 लाइंस की है, बट लोगों को बहुत पसंद आई। तो फिर मैंने खुद सोचा, आई जस्ट थॉट कि हाँ शायद मैं कर सकती हूँ बेस्ट। तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई करा, आई जस्ट गो थर्ड अल्फाज, फिर उसके बाद में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। बस फिर उसके बाद मैंने स्टॉप नहीं करा, उसके बाद मैं इसी फील्ड में रही। अच्छा, क्या आप कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? क्या आप आज भी कुछ न कुछ लिख रहे हो? और कंसिस्टेंसी एक राइटर को कितनी ज़रूरी है? आई डोंट थिंक, मतलब देखिए मैं जब लिखती हूँ ना, मैं आई गेस 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद भी लिखती हूँ, कभी हफ्ते के बाद भी लिखती हूँ। ये जरूरी नहीं है। कोई भी आपने मतलब बहुत राइटर्स के साथ लिया होगा इंटरव्यू में, कौन को भी पूछिएगा वो भी सेम बोलेंगे कि कोई डेली बेसिस पे नहीं लिखता है। ये क्या होता है कि राइटर को जब भी कोई भी थॉट आएगा वो लिख सकता है, बट वो लिखता क्या, वो अपने इमोशंस लिखता है ताकि वो सोसाइटी के साथ रिलेट करे, ताकि वो अपने आइडियाज फीलिंग सोसाइटी को बोल पाए। तो ये नहीं है कि मतलब डेली बेसिस पे लिखता है कोई राइटर। एक राइटर तब ही लिखता है जब उसको कोई आइडिया आता है, जब या उसके दिल में कोई फीलिंग उजागर होती है, तो उस टाइम पे लिखता है। अ, अच्छा इर्तिका, अगर आपकी बुक कोई पढ़ना चाहता है, लेना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो ये किस किस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त अवेलेबल है और इसकी ये फॉर कास्ट एवर क्या है? शाइनी, इसकी कॉस्ट 300 है। तो और अगर कोई लेना चाहता है, बुक ये अमेजोन पे अवेलेबल है, या दे कैन परचेज फ्रॉम नेशन प्रेस, या अगर वहां से भी नहीं ले सकते तो वो डायरेक्टली फॉर एवर शाइनिंग को कहीं से भी, इंस्टा फेसबुक वॉट वो कहीं से भी उनको कांटेक्ट करे, वो उनको अपना एड्रेस वगैरह दे दे, तो वो उनके घर पे डिलीवरी कर सकते हैं, या डायरेक्टली अमेजोन से ले सकते हो। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई फिर आप किसी ऑथर की बुक्स जो है वो ये परचेज कर लेता है, क्या इस ऑथर को कुछ बेनिफिट उससे कितना बेनिफिट मिलता है? मतलब फाइनेंशियली बेनिफिट? जी जी जी, फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली। ये मतलब एक ऑथर पे डिपेंडेंट होता है, और उस पब्लिशिंग हाउस पे जिससे वो मतलब पब्लिश करवा रहा है। लाइक मैंने फॉर एवर शाइनिंग से पब्लिश करवाया, तो वो मतलब उसी रिलेटेड होगा ना, मतलब मतलब उस उनके पॉलिसीज या उनकी वट एवर जो भी उनका पर्सनली होगा, तो वो मतलब उसी पे डिपेंडेंट होता है एक पब्लिशिंग हाउस पे। और इस बात पे भी डिपेंडेंट करता है कि आपकी बुक कितनी बिकेगी। लाइक अगर मेरी बुक अभी तक 50 मतलब लोगों ने खरीदी है, तो उस पे भी डिपेंडेंट करता है, जितना गेन फॉर एवर शाइनिंग करेगा उसी हिसाब से वो मुझे भी पे करेंगे। या अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर एवर शाइनिंग कुछ गेन नहीं करेगा मेरी बुक से, तो वैसे ही मैं भी कुछ गेन नहीं करूंगी। और एंथोलॉजी में ज्यादा पे नहीं होता है आई गेस, व्हेन जब सोलो बुक का मतलब जब एक सोलो बुक करते तो उसमें ज्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एंथोलॉजी में भी अच्छा खासा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिशिंग हाउस जहाँ से आप पब्लिश करा रहे हो, और आपकी बुक वो कितनी बिकेगी, मतलब उस हिसाब से। Acha, Irtika, now what special message you want to convey for those females, for those female students, especially females, and also to male students जो कुछ लिखना चाहते हैं, वाकई दिल से लिखना चाहते हैं, in real sense they want to be, I can say, effective writers. राइट। तो उनके लिए आपका पैगाम क्या है? मैं यही बोलना चाहूंगी उनको कि अपना बेस्ट दे इस फील्ड में।
क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जिससे आप मतलब अपनी सोसाइटी या अपने फ्रेंड्स या अपने रीडर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि अपना बेस्ट दे इस फील्ड में, और इस चीज को मतलब फेम के लिए ना ले, क्योंकि आज ऐसा हुआ है कि हर कोई चाहता है कि वो राइटर बने, हर कोई चाहता है कि वो ऑथर बने, जस्ट कि उनको फेम होना चाहिए, उनकी मतलब एक उनकी भी एक इंस्टा फैमिली या फेसबुक फैमिली होनी चाहिए जस्ट फॉर दैट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फेम के लिए उसको ले, ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी से मतलब कनेक्ट करने के लिए इसको लिखे, अपने पूरे दिल से लिखे। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, उसमें अपना 100% दो, गिव बेस्ट इन दैट फील्ड, लेकिन फेम के लिए ना करें। Irtika, we pray towards Almighty that whatsoever will be your future mission, may God give you success in that particular mission. And we also feel proud that you are the youngest author of Kashmir. Thanks for giving Thank your you. valuable time. Thanks for giving your valuable time to IBAN News Network. I thank you too for having me here. Thank you so much. Dear viewers, in our another episode of Live Interaction Show, we will try to interact you with another guest. Till that, keep watching IBAN News Network. Khuda Hafiz.